अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। आज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस जनाब काजी फायजीसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। इस वक्त ये जो कार्रवाई है ये लाइव दिखाई जा रही है। अब हम आपको ले चलते हैं इस लाइव कार्रवाई की तरफ। इससे पहले आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उसमें सबसे अहम जो रिमार्क था वो ये था चीफ जस्टिस साहब का कि हम चाहते हैं कि आज ही इस केस की कार्रवाई को है वो मुकम्मल कर दिया जाए। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि आज जो है इसकी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और फिर फैसला या महफूज हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इस पर मुख्तसर फैसला जो है वो सुना देगी। अब हम आपको लिए चलते हैं बराह रास्त कवरेज की तरफ। Now, if I may, in light of this very interesting debate that has, or discussion that has been going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका आर्टिकल 177 पढ़ेंगे। है आपके पास किताब? जी 56 का कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का रूल मेकिंग का नहीं, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की। इसमें बैग 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी। अगर मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ, जी ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting, and my question to you is whether the language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. राइट So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule-making power is with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict between, because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be any implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177 before them. They could have followed this language. They could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to because dissipate. the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The parliament cannot. That is the answer. You see, in Baz Mohammed Kakar, this court has उसमें यही very बिल्कुल है। specifically held that because these rules have been framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakar's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर रेफर लीजिए कर देता हूं खत्म कि हाँ सर अमीनुद्दीन साहब The का question क्वेश्चन is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no.
if the law would have existed. then Because the this rules- is an exercise which has been The done. rules So are perhaps subject- one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional No, framework or no, not. the That's a very question- important the- question the which we second are part is missing out. Because that here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from this is making the an order. question. This is the question. If the Parliament legislates, which is, as per your contention, in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. Yes, if it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Hassan, if I may Constitution, just it is a say- reason but to Mr. strike it Hassan, down. If I may follow up on that. You see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore, there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980, those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 1975, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No, no, absolutely no. So the same, so the enabling aspect of it, the The problem fundamental point that. I like your brevity. Ji? I said I like your brevity. Leonard Council. You say yes, no, Leonard Council. which we really appreciate. Leonard Council. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, Leonard if you want to say something more. Leonard Council. Your Lordship would allow me, I have submitted, I am Leonard still Council. answering the question, my Lord. Leonard What Council. can I do? I like your brevity. Leonard Council. This is a question for you and for all the councils. Can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully think submit, this in is- fact, I wanted to make, Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question concept. again, you're doing this. Your I Lordship, would respectfully say, this is not, answer the this is question. not an unelected court, because भाई this आप is a जवाब दे court देना, कहीं दुनिया में which is- होता है। which is दुनिया created by the दुनिया Constitution. में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जाम्पल। जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा, बट जो क्वेश्चन है, रूल्स जो है, दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलें फिर आप दे दीजिएगा, जवाब दे दें। मतलब माय नेक्स्ट पॉइंट, हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए, क्या आपके कहने का मतलब जो मैं समझूं, आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन ओके, इफ नॉट बता दें क्या ऐसा। let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also, and this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं। If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं। ओपनिंग वर्ड्स हैं, the rules must be subject to law and the constitution. Constitution and the law, but इसका who will मतलब make? रूल्स ताबे हैं Does कानून it- के, और does it- कानून 142 में बताया गया है पार्लियामेंट का काम है to make law.
मैंने शुरू में एक ये आर्गुमेंट देखिए आप जरा आप बात की देखें, वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है। बुनियादी उधर ही है सर, वो आप जो सुन रहे तो लेना वो जो एजाज साहब का सवाल था, देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, मगर एजाज साहब का सवाल अपनी जगह है। वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं रूल्स या नहीं, वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें और चलें फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे। सर मैंने जवाब तो दिया था उसका, आपने तो आप कह देते हैं ना हाँ बस। सर मैंने तो लॉ से तो हम साइड किया हुआ है, हम आपको आर्टिकुलेट करें बेहतर चीजें। मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को, अगर तो नहीं फिर अगर नहीं है तो फिर बस जाहिर ना करें ना, किसी और को मौका दे दें जी ना। मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं नहीं छोड़िए ना, फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे और बता देता हूँ सर। जरा जल्दी कर लें प्लीज। सर दिस लॉ affects वो brevity is the soul of wit. absolutely जी। sir. This Thank is you for agreeing. for a change, I believe. Sir, the constitution has created a balance between the three प्लीज pillars. अब ये बात कितनी Sir- दफा कर चुके हैं, ट्रिकोटमी ऑफ पावर्स की। Sir, नहीं, मैं it's a different point है। जी। After 18th constitutional amendment, the chief justice, जो पुराना concept था chief justice is first among the equals, has gone away because the constitution has now given a provision in the constitution where the honorable chief justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the chief justice. And there are other functions in the constitution which are ascribed or prescribed for the honorable chief ये आप justice बिल्कुल alone. you're just waffling, you're not articulating Sir, any sir, contention. this is what, so what I am saying I mean, is, it's obvious, it's written there. So what's so profound here? उसके constitution के consequences है ना, Mr. इसका Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर मीनिंग है ना, अगर आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर रिपीटिशन है ना, कोई That is the मजीद whole- बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे। So constitution of the benches जो मैंने case law is the sole prerogative of the honorable chief justice, और इसमें independence of judiciary के लिए जो एक it's a basic principle of constitution system, मैंने case law आपको दे दिया है। And my last point जो अपील के अंदर मैंने already point out किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की, और मंसूर साहब ने ये बात की थी। इस कानून में 2 चीज़ें हैं, नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील। वो ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं, इसका नाम शायद हो सकता था ज़रा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है। उधर उस पे आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी सर, उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए मैं ना। अपनी राय नहीं हसन साहब, उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे। जी सर, एंट्री 58 सर, उसमें एक सवाल है आपसे, जी। अगर आप जवाब दें। एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल है। matters which under the constitution are within the legislative competence of Majlis Shura or relate to the federation. नहीं 55 sorry. 55 जी, 55 है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? इनलार्जमेंट है या ये सब वो है, रिट्रैक्शन है? और खास तौर पे जो टू द एक्सटेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, आप देख। सवाल तो ये है ना कि इसमें ये देखिए महासन हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है, सर ये और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है? अभी तक वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया। मानी बताइए। जी आपका एंट्री सवाल का 55 जवाब के ये है जरा कि सर मानी एंट्री बता दें। 55 के अंदर हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55?
Sir, this relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as is expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. क्या माने? इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize specially करेगा तो वो चीज वो आएगी. तो by हो गया ना, under the constitution का क्या मतलब? Sir, which is by or under means क्या? Are you anything which is saying there are covered by the interchangeable words Constitution. and under doesn't add anything? Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that. It's a very important case. Give it the, you just agreeing, disagreeing. My lord has asked a very specific question, and under what does it add? Say nothing, say something, what does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your lordship deduce through an interpretation. Are Could they also interchangeable be terms? included in that. That Because doesn't- by it the does- Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement, the But word, it- but it आप relates जवाब to- तो देना पहले सवाल. Sir, उसका देखिए आपसे पूछा है ना by और under क्या under by the parliament है, by the act of the parliament है, under sir, the constitution. it doesn't Under the read that. constitution से क्या मानी, कोई reference देना. under the Constitution which is provided and in the Constitution would include everything and anything which is in there. Mr. which Hassan, would you're be not, a power to make Hassan legislation. साहब, you're not also. adding anything Sir, useful. मैं बस conclude फिर आप करना इसको एक conclude ही चीज करें. सिर्फ बता दें, enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and it is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So In the anything which Constitution. maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that or. Can you cite an the- example? the- Learned sir, Cite counsel, an example. learned counsel, ये अपील जो है, ये अपील किस jurisdiction और power की remedy है? Sorry? किस power और jurisdiction की remedy है? The appeal 184(3) की है. जी. That power already exists Sir, and it's only a continuation of the same power. Sir, 185 के अंदर 184 की appeal does not exist with utmost respect. Learned counsel वो जो my lord ने सवाल पूछा वो है, सवाल के ऊपर कि again देखें ना, देखिए दो- question सुन ये ले, है सवाल कि ये if है, your lordships are to सवाल ये read है, into the सुन ले, constitution then that's a different The question. question is, 184 is before 185. ठीक है? सारी जो appeals सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If the framers of the constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है. आर्टिकल आइटम 55 में enlargement के यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई jurisdiction create या confer कर सकते हैं, is that doable? That's not और doable. उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और काफी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई है तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिस्डिक्शन लार्ज सर वो कैसे फिर sir, अपील आ sir, गई. we are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, entry? the legislation relating to that has got No, nothing to do with अच्छा, एक 184 second. power. जी मैं वही आपसे वो पूछ तो रहा हूँ. जो- एंट्री 55 में स्पेसिफिकली enlargement of jurisdiction डील करती है तो we will not go to any general entry, we'll go to the specific entry first which says that enlargement of jurisdiction can be either expressly given in the constitution और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया लेकिन चलें बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई
सर उसमें जो अपील Expressly जी express जी provision. सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील नहीं, मैं कंपटीशन कमीशन चले हसन साहब, यू नॉट रियली सर आंसरिंग मैं एक जवाब एनीथिंग. देता नो हूँ नो, यू आर नॉट आंसरिंग, सॉरी टू से. तो आप सर- किसी और को दे देना. सर, अब I काफी हो गया ना. अब देखें 1 बज रहा है. अब आप कितना, आपने आधा घंटा 20 मिनट जी आधा जी घंटा जी कहा जी था, हमने मेरा आपको मेरा 2 सर घंटे दे conclude दिए हो। हैं. सर सर साहब अपील साहब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. आप एग्जाम्पल की बात हो रही है. देखिए मैं लास्ट डेट पे भी मैंने क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं आया. इसे आपके लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 199 है, उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई है. उस अपील को बाद में 269 आर्टिकल 269 में उस जो आपके ऑर्डिनेंस था, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील की रेमेडी दी गई है वो दुरुस्त दी गई है. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कि वो हाई कोर्ट से मुताल्लिक है, नो डाउट. लेकिन हाई कोर्ट को भी 202 कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 191 कर रहे हैं. दोनों सेम लैंग्वेज है. अगर 199 में अपील की रेमेडी आज तक चली आ रही है, क्यों ना 184(3) में आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? वहाँ होनी चाहिए बेशक हाई कोर्ट से. सर वो सिविल प्रोसीजर कोड की अमेंडमेंट के थ्रू अपील है, दैट इज अ डिफरेंट law reforms कॉन्नोटेशन. ordinance हियर है इट्स अ वो. कॉन्स्टिट्यूशनल See, प्रोविजन, law इट्स अ reforms डिफरेंट ordinance कॉन्नोटेशन. वो तो हम उसको दो चीजों को इंटरलिंक नहीं कर और सकते. आइटम 55 में हाई कोर्ट के मुतालिक लेजिस्लेशन पे कदगन नहीं है. कोई भी नहीं है. Yes, तो- Mr. दूसरा Bandari, आपसे पूछा था I think enlargement. you want to I now still take have the a rostrum. question. I have a question. I have a एक question. सवाल ये जो और- आपसे enlargement of jurisdiction पूछा था, I go back to the question कि जो constitution of benches है, वो कौन सी jurisdiction है under the constitution जिसको enlarge किया जा रहा है? कोई भी नहीं है. वो तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस तो रूल्स में बनाई है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन नहीं है. दैट्स इज द होल. That's not an enlargement of jurisdiction, or is it a jurisdiction? That is all, in fact, that is a jurisdiction, that's not an enlargement of jurisdiction. Mr. Constitution Hassan, of benches are by way of the rule-making part that the court has decided के benches इस form में So होंगे. that's not an England exercise के- of jurisdiction? England के अंदर they have actually formed a special law for that. कि ऐसी जबानी बात ना करें, लॉ का हवाला दीजिए. सर इंग्लैंड में ऐसे लॉ हो गया, ऐसे नहीं करें ना, दें चीजें हमें फिर. मिस्टर हसन, इस लॉ में दो चीजें हो रही है ना, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, एक अपील की जुरिस्डिक्शन की बात है. तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको सेपरेट रखें. बिल्कुल सेपरेट करें. ख्याल में बंदारी साहब शायद बेहतर जवाब दें, शायद या सुनते हैं इनको. जी सर, बिल्कुल. Thank you very much for Thank your you. very grateful. You are a petitioner. My lord, I am representing PTI. Your lordship said. Are you a petition number? My lord, a notice was issued in all petitions. Have you filed something? My lord, I filed two concise statements. CMA 3933 3933 and CMA number 8351. 8351. What are the difference between the two? My lord, the first was filed several months ago. The 8351 was filed yesterday in the light of the observations that have been made on the last date of hearing, the submissions made by counsel. I've tried to address some of the points that have come up during your lordship's observations. First of all, even tell today. me where you stand. My lord, I am under instructions to support the petitioners, but with some caveats. I am not saying, and I'll just say this and then move on to my submissions. Well, I am not saying that the parliament cannot per se make any law as far as the practice and procedure of the Supreme Court is concerned. It can, but that power is heavily circumscribed by various express and structural limitations within the Constitution. So that's heavily circumscribed. But within those limits, it can. And I'll expand on that. So as my Lord Justice Mansoor just said, there are two aspects to the... First, finish your thing. My Lord, Then you come to what we have my observed. Lord, yes. You said you are conceding that the parliament can, but their powers heavily circumscribed. Heavily circumscribed. Now, which particular provisions of this act are you think the parliament has exceeded its jurisdiction? If I may, if you could first expound on your initial proposition, sorry, as far as the first point, if you could expound on that particular part, that the legislature has the power. Please explain that. Then move on to the issue where the restrictions are. My Lord,
Absolutely, that's exactly how I will address. And I will address both aspects of the law on this point. First aspect is the practice and procedure aspect, sections 2, 3, 4, 6, 7. And then there is the appeal, and I'll address them separately. I'll start with the practice and procedure bit first. My lord, the various articles have been read out before the court many times. My lord, Article 1, let's start off with where the Parliament draws its legislative power from. There are two sources in the Constitution. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे थे। कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है, फुल कोर्ट है, उसकी कार्रवाई आप बराह रास्त देख रहे थे। तो अभी तक की जो कार्रवाई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था नाज़रीन कि चीफ जस्टिस जो हैं जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने ये इशारा दिया कि आज इस कार्रवाई को कंक्लूड कर दी जाएगा। आज सुबह से जो दरख्वास्त गुजार जो हैं उनके जो वकला हैं वो दलाइल दे रहे थे, और अभी तक के जो सारे दलाइल हैं अगर हम उसको देखें तो जो सवालात आ रहे हैं मोअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से, बेंच की तरफ से, बेंच के अरकान की तरफ से, तो वो दो तीन चीज़ों के गिर्द घूमते हैं। नाज़रीन, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक इसके अंदर है कि जो बेंचेस की फॉर्मेशन का इख्तियार है चीफ जस्टिस का, उसके अंदर दो सीनियर तरीन जजेस को पार्लियामेंट ने शामिल कर दिया है कि जो पार्लियामेंट ये जो बेंचेस बनते हैं वो इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है उनकी जुरिसडिक्शन है, वो मतलब उसको बनाते हैं, उनका इख्तियार है, इस वक्त कुली इख्तियार है कि वो जिस बेंच में जिस भी जज को बिठाना चाहें बिठा दें, उसके अलावा जिस केस को जिस बेंच में भेजना चाहें भेज दें। तो पार्लियामेंट ने ये एक्चुअली तरमीम की इसके अंदर, और जो 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो कि जनरल ज़ियाउल हक का जो आमराना दौर था उसके अंदर बने थे, उसके अंदर पहली दफ़ा जो है वो पार्लियामेंट ने जो है उसके अंदर तब्दीली की, तरमीम की, और चीफ जस्टिस के साथ दो सीनियर तरीन जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एक कमेटी फॉर्म कर दी तीनों की, और वो जो कमेटी है वो अपने रूल्स बनाएगी अपने, और उसके तहत जो है वो अपनी कार्रवाई जो है उसको चलाएगी और बेंचेस जो है उसको तश्कील देगी। इसी तरह जो 184(3) का जो इख्तियार था वो भी चीफ जस्टिस साहब जो है उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब उसको भी जो है उनको दो सीनियर जजेस के साथ जो है वो मशवरा करना होगा, और उसके लिए कम अज़ कम जो है वो 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो है वो बेंच बनाना होगा। एक तो ये कानून इसके हवाले से जो है उसके अंदर तरामीम की गई। दूसरा, अपील 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है और उन केसेस का फैसला करती है, तो उसके अंदर अपील का हक नहीं है। आप अपील नहीं दायर कर सकते, आप नज़रसानी की अपील दायर नहीं कर सकते, आप उस केस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो है वो अपील का हक जो है वो दिया है पार्लियामेंट ने। तो इसको जो है वो चैलेंज किया गया था, इसके ऊपर एक 8 रुकनी बेंच बना था जिसने ये कानून बनने से पहले इसके ऊपर जो है अमल दरामद रोका था, और उसके बाद फिर जब चीफ जस्टिस जो थे उमर अतिया बंदयाल वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी जगह चीफ जस्टिस बने, तो फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त के ऊपर एक फुल कोर्ट तश्कील दिया। 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, 15 के 15 जजेस जो हैं ये अब इस कार्रवाई को सुन रहे हैं, इस केस को सुन रहे हैं, वो वकला को सुन रहे हैं। और पहले दिन जो कार्रवाई हुई थी उस दिन जो है वो ना सिर्फ ये कि दरख्वास्त गुजार जो वकला थे उनको सुना गया, बल्कि अटॉर्नी जनरल को भी सुना गया। आज जो है जो बाकी बच गए थे दरख्वास्त गुजार उनको सुना जा रहा है, और उसके बाद पहले दिन की कार्रवाई के अख्ताम पे सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी थी जो वकला हैं उनको कि आप अपने जो सवालात हैं जजेस के उनके जवाबात, और मज़ीद अगर कोई आप बात करना चाहते हैं तो आप उसको तहरीरी तौर पे जमा करवा दें। तो 25 सितंबर की डेडलाइन थी, जवाबात जमा हो गए। अब जिनके जो वकला बाकी बचे थे दरख्वास्त गुजारों के, वो आज अपने दलाइल दे रहे हैं। इसके अंदर जो दो बुनियादी नुक्ते हैं उनको नाज़रीन समझने की ज़रूरत है। अब तक जो सवालात हुए हैं, जो रिमार्क्स आए हैं जजेस के, और जो आर्गूमेंट हो रहा है,
जो दलाइल वकला की तरफ से दिए जा रहे हैं। दो नुक्ता नज़र जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, वो बेंच के अंदर भी मौजूद हैं, जजेस के अंदर भी मौजूद हैं, वो वकला के अंदर भी मौजूद हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि पार्लियामेंट जो है उसको कानून बनाने का इख्तियार है और वो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उनको रेगुलेट कर सकती है। पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो नया कानून बना सकती है, उसके अंदर तरमीम कर सकती है, उसके अंदर इजाफा कर सकती है। ये एक नुक्ता नज़र है, ये वकला के अंदर भी है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी मौजूद है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है, बल्कि 1980 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए रूल्स बनाए थे वो किसी भी कानून से बाला हैं, उनको सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है, उनके अंदर तब्दीली की जा सकती है या तरमीम की जा सकती है। तो ये दूसरा नुक्ता नज़र है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी मौजूद है, वकला के अंदर भी मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तहरीक इंसाफ और कुछ और जो वकला थे और जो फ्रीक थे, उन्होंने चैलेंज किया था इस कानून को कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हक हासिल नहीं है। तो अब ये जो दलाइल हैं, इसकी रोशनी में ये दलाइल हो रहे हैं कि ये जो कानून है, जज जो चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, इस तरह बाकी जो जजेस हैं, वो ये सवालात इस हवाले से सवालात कर रहे हैं, जस्टिस तारक मसूद हैं कि ये जस्टिस जाफर मंदोखेल हैं कि ये जो कवानीन हैं, ये जो इसके अंदर ये सारी जो सिचुएशन है, तो इसके अंदर जो है वो कौन से आइन की शिकों की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है, कौन से जो आइन के अंदर या जो पहले से मौजूद कवानीन है उसमें से किस चीज़ की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये जो कानून है इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके ऊपर आर्गूमेंट हो रहे हैं, इसके ऊपर वकला जो है वो दलाइल दे रहे हैं। जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये फरमाया था अपने दलाइल में कि ये दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं, ये जो दरख्वास्तें हैं इनको खारिज कर दिया जाए। जबकि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला का ये कहना है कि इन दरख्वास्तों को कबूल कर लिया जाए, मंजूर कर ले फुल कोर्ट, और ये जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको कालअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। और दूसरी तरफ जो जजेस हैं, जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो ये आर्गू कर रहे हैं और उसमें कभी कभी थोड़ी बहुत बात करते हैं या सवाल करते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब भी, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल जवाब हैं वो जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से हो रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, वो बार बार इस बात के ऊपर वकला को कह रहे हैं कि आप दलाइल दें कि किस तरह पार्लियामेंट जो है, क्योंकि ये फैसला भी आ चुका है 3 जजेस का कि जो सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे, वो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट या कानून के ऊपर फौकियत रखते हैं। ये उनका नुक्ता नज़र है और इसके ऊपर जो है इस वक्त ये सारी बहस चल रही है, ये आर्गूमेंट चल रहा है। दरअसल ये दो सोचें या दो ख्यालात या दो रवायात चली आ रही हैं पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर। एक सोच, और ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद चीफ कोर्ट होती थी, सुप्रीम कोर्ट उसका नाम नहीं था, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट 1973 का जो आइन था उसके तहत रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो समात है, अब दोबारा हम आपको जो है वो लाइव जो है उसकी कवरेज की तरफ लिए चलते हैं। जब भी वक्फा आएगा तो हम दोबारा से जो है वो कुछ नए आर्गूमेंट हुए होंगे, अगर कोई नई दलील होगी तो जो भी लेटेस्ट होगा फिर हम उसके हवाले से इसके ऊपर बात करेंगे। अब हम चलते हैं वापस लाइव ट्रांसमिशन की तरफ। 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14. Article 14. 1-4.
1/4. Dignity of man. Dignity of man. Article 14. It says, the dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. This by itself doesn't say who will make the law. The province will make the law or the federation will make the law. In order to determine who can make the law for the purposes of Article 14, you have to go to other provisions of the Constitution. The same is with respect my submission for Article 191 also. It does. ये आर्ग्यूमेंट आप पूरा तो कर लें तो प्राइवेसी के मुतालिक कौन बना सकता है कानून? मतलब फेडरेशन भी बना सकती है और प्रोविंस भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव पावर स्प्रेड कैसे है, और दोनों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ, पीनल लॉ पे हो सकता है गलत बनाए हों जी, प्रोविंस भी बना सकता है। और प्राइवेसी वगैरह के बारे में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, फेडरेशन ने भी बनाया हुआ है। नहीं, पर उसी तरह अगर चलें तो 191 में सब्जेक्ट टू लॉ है, एंड सपोज देयर इज नो, एंड आई थिंक देयर इजंट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री रिलेटिंग टू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, देयर इज नो, सो then the word law would become redundant in 191. No, my lord. How, what would happen to that? That's exactly what I'm saying. I'm trying to proceed step by step. So 191, as I read it, my lord, the mere fact that the expression subject to law is used does not confer any legislative power, just as that it doesn't confer any legislative power under Article 14. What it is, my lord, the power is conferred on the Supreme Court. The power is on the Supreme Court to make rules. Subject to law is a limitation on that. It's a limitation on the power that has been granted to the Supreme Court. My lord, there are two Supreme Court judgments which say that, my lord, your lordship, I've mentioned them in my, written submission. Mr. Bhandari, do you mean that judgment cite kar dein? The first, the citation. Mr. Bhandari, do you mean that before making rules, there must be some law? well, I'm not saying that. There may be. So subject to law, what does it mean, subject to law? Well, and a validly enacted law by the appropriate legislature. It could be pre-existing. It could Without any enactment, rule cannot be made. no, rules can be made. They can But be subject to law. My lord, the rule-making power is a standalone independent power on the Supreme Court. But subject to law. If there is a law, then the Parliament can make that law within the limits that I will just explain. You said Parliament can make a law. Parliament can, but I will just explain what in my humble understanding are the limits on that. I will explain that. But there citations there. Ji, my lord, Mr. Bhandari, that is subject to constitution and law. So you borrowed this power from the constitution and subsequently you made rules. yes, my lord. This is the intent. This is the intent. This is the intent. My lord, the citation is by Muhammad Khan versus Border Allotment Committee, PLD 1965, Supreme Court 623, at page 633. For what proposition? My lord, this expression, subject to constitution and law, was discussed in detail by Mr. Justice Kekaus in his judgment, and this was then followed in LDA versus Imrana Tivana, 2015 SCMR 1739. एक सेकंड दूसरा कौन सा है? 2015 SCMR अब तो दो यार 1739. ठीक है, ये phrase LDA discussed versus हुआ Imrana Tivana. है. This phrase has been discussed. This phrase, subject to the constitution and the law. कैसे किस नतीजे पे पहुंचे? And they said that it means that the power which is being made subject must be made subject to a law which is derived from some other power in the constitution. ठीक. See? So that's my submission, that when it says subject to the law in Article 191, in order to know what law can be made under in this context, you will have to go to other provisions of the constitution. relevant page बता दीजिए उसका कौन सा judgment है? Well, at 65 Supreme Court 623 at 633. 633 और दूसरे वाले का? And Imrana Tivana का है जी 2015 SCMR 1739, paras 51 to 53 at 1764, 1765. Lahore Development Authority over T1. इस वाली लॉ की सोर्स पर क्या? गो अहेड. Iski. So this by itself, I say. So you go back to 142, and there is no other provision in the body of the Constitution dealing with this.
So, my lord, you go back to 142. 142 takes you to entry 55. So let us see whether there is any power. Entry 55 is only related to the jurisdiction part. My lord, it will also cover practice and procedure. Just let me explain why. It is only related to the subject to the constitution. My lord, what? ये जो आप अभी बता रहे हैं ना, इसमें तो subject to the No, my constitution lord, है, and law के ऊपर नहीं है इसके ऊपर, आप जो definition बता रहे हैं, Ketal साहब ने specifically subject to constitution and law भी discuss किया. judgment है ना, ये LDA का जो judgment है, इमरान टीमाना का, नहीं सर, आप केटल वाला देखिए, केटल paragraph साहब की. 52, the only word subject to the constitution. No, sir. ये जो 65 सुप्रीम कोर्ट है, उसमें दोनों And डिस्कस. it is referring the article 142, उसमें तो शब्द लफ्ज़ ही शुरू में वो introductory तो है, सब्जेक्ट तो बताया subject to constitution. जी, बट जो 65 सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ये उन्होंने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों को डिस्कस किया. इसका जो 65 का है, कौन सा है पेज? 623 at 633. जरा इसको पढ़ लें. 65 अगर आप देख लें सर. Yes. जी, my lord, at 633. ये भी subject to this constitution ही है, law नहीं है इसके अंदर. तो है. जी, आप देख लें. पेज आप बता रहे हैं उसमें तो नहीं मिल रहा जी, है. ये आप यहाँ से. You are referring page 633. ये सर मैं नीचे से 11th, 12th line from the bottom. At 633. The central legislature can legislate with respect to jurisdiction of courts, but the jurisdiction granted by Article 98 is subject only to this constitution and not to this constitution and the law. A reference to the various provisions then my lord is correct. My lord, आगे देख लेते हैं. A reference to the various provisions of the constitution will show that whenever it uses only the word subject to this constitution, it does not mean subject to this constitution and the law. But whenever the intention is that a particular provision should be subject not only to the constitution, but to a law enacted by virtue of powers granted by the constitution says so. So, when constitution and the law. So what? I'm not following. Well, what it is saying is. Don't use your own words, use the words of the judgment. This is that whenever the intention is that a particular provision should be subject not only to the constitution, but to a law enacted by virtue of powers granted by the constitution. It's not enabling, it's not a power that is giving legislative competence. Yes, that's what I'm saying, that You have to go back looking for the competence. Yes, you have to go to the source of the power in the constitution. And here the source of the power has to be in some other provision of the constitution, which takes you to 142, and 142 takes you to entry 55. Fair enough, but that's not coming out of this judgment. Well, that is the only judgment on this that I No, but this. ठीक है, आपने मेहनत की, that's good. But this is how I read this passage. Well, then let's go to entry 55. You say that that law under 191 would stand through 55. It can only stand through 55. Only through 55. Only through 55. Your lordship has- एक second ठहर जाइए. Why not 55 read with 59? But these are 59. No, the 59 भी पढ़ लेना. 59 relates to matters incidental or ancillary to any matter enumerated in this part. So it may not, देखिए जरा सा, my understanding is I may be subject to correction. It may not specifically be mentioned there, but it can expand. If otherwise 59 is redundant, so then ancillary matters, incidental or ancillary matters can be added on to. So every provision, every item should be read with 59. Absolutely. ठीक है. अच्छा, Absolutely. एक second. Incidentally, you mentioned privacy, and I was just going through the list. I don't come across that word in the fourth schedule. Please correct me if I'm wrong. Well, You said the Federation can make law, because you started with Article 14 and privacy you mentioned. My lord. But the cursory examination of the fourth schedule does not throw up the word privacy. it doesn't, my lord, but there No, are, but you said then both the Federation can make laws. and it has. No, it has, can it still be unconstitutional? But in the argument, you should forget if it has, this they have also made a law, so that's neither is here nor there. But if the word is not mentioned, then your argument should have been that only the province can make the law. Well, if Please enlighten me. My lord, the parliament has
for example, ये example यही ले लेना। legislative competence to enact laws about companies. Now, in exercise about companies. No, Bandari sir, no, please don't do this. No, don't do this. Make an argument. No, you use the word, you chose the word of all the thousands of words circulating in the universe, privacy. You chose Article 14. Either you take back that argument or entrench that argument in legal argument. That's what I'm trying to do. आप companies पे चले गए. मैं company से example आपको से समझाऊंगा जी. Learned counsel, Company, let me इसको मैं जरा let me answer this question. इसको formulate कर दो. आपने जिस तरह कहा कि कानून बनाने का इख्तियार है आर्टिकल 14 regardless of and notwithstanding article 191 say a law is validly and competently made by the legislature. What if that law is in conflict with the rules made by the Supreme Court under article 191? How will you read subject to law? Will the rules prevail or that law? I will come to that, but let me answer my Lord the Chief Justice's question. My Lord, in exercise of power granted by entry 31, the company law is there. Now, the company law contains elaborate provisions which deal with the question of privacy of businesses, their premises. It deals with when search and seizure can be made, documents can be. Take the point. Similarly, because criminal law is on the concurrent list under entry 1. You make the point about privacy. Therefore, the province has also made laws which affect the concept of privacy. Privacy alone, privacy can very well be a standalone subject matter of a statute. It is a concept which can federal or provincial. Both. Okay, you made your point. If you could come back to the. It can be both. You made your point. My Lord. We've noted your point. Lord, if you could come back to entry 55. Entry 55. Let's read it, my Lord. Jurisdiction, and it has two parts. The first part, and my Lord, what the Honorable Chief Justice said about entry 59 is exactly my case, and I'll explain why. The first part of entry 55, jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list. So this doesn't apply to the Supreme Court. And to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers. Once this is invoked, then, as my Lord the Chief Justice said, matters ancillary or incidental or ancillary to any matter can also be brought in. Now, what does this expression mean? Entry 55, there can only be enlargement of jurisdiction, but only where there is an express authorization by or under the Constitution. But you're missing out the earlier words, as is expressly authorized by or under the Constitution. Yes. No, just wait a minute. Where is 184.3 expressly authorized? It is not. It is. 184.3 is in the Constitution. But there is... You're not hearing the point. The extent as is expressly authorized by or under the Constitution. 194th part तो हमें दिया हुआ है ना आइन ने. हमें बस खुद से तो नहीं आया ना. दिया हुआ है आइन ने. ठीक है? The enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. Now the question is that 184.3 power that is already given to us. The Constitution could have not given that power to us. It is not an inherent power of the nature as under Section 9 of the Civil Procedure Code. Correct? My Lord. It's an extraordinary power which is rarely given in any constitution in the world. Correct, man. Correct? So Correct. far we are good. Correct. So that power was given by the Constitution to us. Now, are they giving an appellate forum therein, enlarging the power or taking away the power? My Lord, twofold answer. They are taking away the power. How? By, and I rely on the judgment. Judgments को छोड़िए ना, आप arguments दीजिए ना अपने. मैं arguments precedent की base पे दूँगा. आप अपने हम no contention note कर लेंगे आपके. It is a curtailment of power
because the concept of finality that attaches to judgments under Article 184(3) But that's a different is taken away. concept. देखिए, for instance, a 3-member bench decides something. Naturally, a 3-member bench cannot undo it. 5-member bench हो गई या whatever, full court हो गया. तो 184(3) की उन्होंने enlarge कर दिया power. ठीक है? I'm trying to wrap my head around the fact that you keep saying that it's taking away the power. The first power was conferred by Parliament through the Constitution. That power is being enlarged. If this power was given to, for instance, the Senate of Pakistan, okay, you will sit in a... अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप बराह रास्त मुलाज़ा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको। अब तक की जो कार्रवाई हुई है, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि दो नुक्ता नज़र जो हैं वो मौजूद हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत पुराना मामला है। एक ये है कि क्या पार्लियामेंट में बैठे हुए अरकान पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का, मुख्तलिफ कानून साजी करने का इख्तियार है या नहीं है। एक नुक्ता नज़र ये कहता है कि नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी नहीं होते ज़्यादा, इनको कानून की कोई समझ भी नहीं होती, और ये उठते हैं और आ जाते हैं पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं और हमें जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। हम जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं, हम कानून को बेहतर समझते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम आइन को इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगरचे पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन हमें जो तशरीह का इख्तियार है, हम उस तशरीह के इख्तियार को यहाँ तक लेके जा सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से उसके जो आर्टिकल्स हैं वो हम लिख सकते हैं। तो हम जो तशरीह करेंगे वो दरअसल कानून होगा, और उसको जो है वो माना जाना चाहिए, ना कि जो अरकान पार्लियामेंट कानून साजी करते हैं वो हमें उसका भी इख्तियार है कि हम पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसको किस हद तक इस्तेमाल करने देते हैं या नहीं करने देते, कौन से कानून को हम कालादम करा देते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ सोचें हैं जिसका टकराव बड़े अरसे से जारी है। ये जो कानून है, इसके ऊपर भी जो सारी बहस है वो इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है कि क्या जो पार्लियामान है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार आइनी इदारे के तौर पर, जो आइन ने उसको इख्तियार तफवीज़ किया है, उसको जो इख्तियार दिया है कि वो कानून साजी कर सकती है, और जो पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से कानून वो बना सकती है, किन किन मौज़ूआत के ऊपर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, तो ये जो इख्तियार है ये पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पे जो है अपना इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बार बार मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दूसरा नुक्ता नज़र ये कहता है कि नहीं, ये जो इख्तियार है ये सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगी कि कौन सा जो कानून है वो आइन के मुताबिक है, वो कौन सा जो कानून है वो कानून जो है वो आइन के मुतसादम है। तो इस बुनियाद पे अब तक बेशुमार केसेस हैं कि आइनी तरमीम हुई हैं, कवानीन बने हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, उसको कालादम करार दिया और कहा कि ये गैर आइनी है। तो ये ज़्यादातर जो बेंच के सवालात हैं इस कानून को लेके, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेके, वो इस हवाले से हैं कि वो पूछ रहे हैं वकला से कि आप ये बताएं कि कौन सी इसकी शिकें जो हैं वो किस आइन की आर्टिकल के ख़िलाफ़ हैं, कौन सा ऐसा आइनी जो है वो नुक्ता है जिसके कि ये ख़िलाफ़ हैं, आइनी स्कीम है जिसके कि ये ख़िलाफ़ हैं, और किस तरह से ये कानून जो है, क्योंकि जो वकला हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दायर की हैं इस कानून के ख़िलाफ़, वो ये कह रहे हैं, उनका आर्गूमेंट ये है, वो ये दलील दे रहे हैं कि ये जो कानून है इसके ज़रिए अदलिया की आज़ादी पे हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी को सलब करने की कोशिश की गई है। जबकि जो इस कानून के हक़ में हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे तो हमने अदलिया को जमहूरी बनाने की कोशिश की है। पहले ये सारे इख्तियारात जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब की ज़ात के अंदर मुश्तमिल थे, हमने उसके अंदर 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल करके उसको ज़्यादा जमहूरी बनाने की कोशिश की है। हमने सुप्रीम कोर्ट को एक फ़र्द वाहिद की बजाय सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करने की जो है वो कोशिश की है। तो ये वो सारा बहस है, ये वो आर्गूमेंट हैं जो कि अभी तक हो रहे हैं, और अभी मज़ीद जो है वो दलाइल जारी हैं। हम आपको वक्तन फ़वक्तन इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।